Hello friends, welcome to ESC Gate PSU short e-lecture. Today in this video we are going to discuss about the various ecosystems in India. So friends, what is an ecosystem? फ्रेंड्स हमारे इन्वायरमेंट में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में एक डिपेंडेंसी है, एक रिलेशनशिप है, इनके इस इंटरेक्शन के कारण एक कॉम्प्लेक्स फंक्शनल यूनिट बनता है जिन्हें हम इकोसिस्टम कहते हैं. In the nature, several community of organisms live together and interact with each other as well as with their physical environment as an ecological unit which is called an ecosystem. So बात करते हैं टाइप ऑफ ecosystem in India की. So basically there are two types of ecosystem in India. That is, one is the terrestrial ecosystem and the other is the aquatic ecosystem. टेरेस्ट्रियल ecosystem मतलब कि इनलैंड ecosystem मीन्स द ऐसा ecosystem जो कि लिथोस्फीयर में, एंड एक्वेटिक ecosystem ऐसे ecosystem जो कि हाइड्रोस्फीयर में. So within the terrestrial ecosystem there are 5 different types. That is the forest ecosystem, grassland ecosystem, desert ecosystem, mountain ecosystem and the ghats. Whereas in the aquatic ecosystem there are freshwater ecosystem and the second is the marine water ecosystem. It also called as the ocean ecosystem. So talking about the forest ecosystem in India, there are several types of forest are there depending upon the position, weather, rainfall, atmosphere and etc. other physical or geographical factors. There are tropical rainforest, tropical deciduous forest, temperate broadleaf forest, temperate needle-leaf forest and the last one is the alpine and tundra forest. सो फ्रेंड्स, बात करते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की. तो जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वो सब डिवाइड हुआ है दो कैटेगरी में. दैट इज़ फर्स्ट इज़ द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड सेकंड है सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट. फ्रेंड्स, ये जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है ये ऐसी जगह पाया जाता है जहाँ पर जो रेनफॉल है वो बहुत ही ज़्यादा होती है. मीन्स जो एनुअल रेनफॉल होती है इट मस्ट बी मोर देन द 200 सेंटीमीटर ऑफ द एनुअल रेनफॉल. एंड रेनफॉल के साथ ही साथ ऐसी जगह जहाँ पर थ्रू आउट द ईयर सनशाइन करते हैं वैसी जगह पे ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं. एंड फ्रेंड्स, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो पेड़ होते हैं उनकी जो एवरेज हाइट होती है वो 60 मीटर होती है. And some of the regions in India that supports the tropical rainforest are the Western Ghat, which ranges from the state of Gujarat to the Tamil Nadu, and some of the plain of West Bengal and Orissa. And the third is the Northeast India, that is the seven sister states, mainly Meghalaya. Major plant species of the tropical rainforest are the ebony, mahogany and the rosewood. सो फ्रेंड्स, बात करते हैं ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट की. तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की तरह ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट भी जो है वो सब कैटेगराइज्ड हुआ है दो कैटेगरी में. फर्स्ट इज़ द मॉइस्ट डेसिडुअस एंड द सेकंड इज़ द ड्राई डेसिडुअस. फ्रेंड्स, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट में जो ट्रीज़ होते हैं वो साल में एक बार अपने पूरे के पूरे उनके जो पत्ते होते हैं वो झड़ते हैं साल में एक बार. और ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट को जो रेनफॉल की रिक्वायरमेंट है उनका रेंज है 70 to 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल, एनुअल रेनफॉल. And in India, most of the forest in India are the tropical deciduous forest, and the Kerala is the state with most of the deciduous forest. Or some of the major plant species of the tropical deciduous forest are teak, sal and the sandalwood. फ्रेंड्स, बात करते हैं टेम्परेट ब्रॉडलीफ फॉरेस्ट की. तो दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड इन द वेस्टर्न हिमालय एंड ये जो है 1500 से 2400 मीटर की ऊंचाई में पाए जाते हैं. एंड प्लांट स्पीसी जो इस रीजन में पाए जाते हैं उनका साल में समर सीज़न में पत्ते बहुत ही झड़ते हैं, बट दे नेवर बिकम द लीफलेस. दैट वाज हैपन इन द केस ऑफ द डेसिडुअस फॉरेस्ट. एंड जो प्लांट्स ट्रीज़ इस टाइप के फॉरेस्ट में पाए जाते हैं उनकी जो एवरेज हाइट होती है वो 25 से 30 मीटर की होती है. और ओक ट्री के बहुत से वैरायटी
इस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं. Now let's talk about the temperate needle leaf forest. So friends, this type of forests are found in the Himalayan range at an altitude of 1700 to 3000 meter, and this forest contain valuable plant species like pine, deodar, and also this forest support evergreen canopy of the needle leaf forest, as mentioned in their name, that is the temperate needle leaf forest. Likewise, the trees in those forests have the leaves like a needle. सो फ्रेंड्स, इस मैप में हम देख सकते हैं कि जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है वो वेस्टर्न घाट के कुछ रीजन्स में आ रहे हैं, एज वेल एज जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है वहाँ पर आ रहे हैं, और इसी के साथ ही साथ जो सेमी एवरग्रीन है वो वेस्टर्न घाट के कुछ रीजन में आ रहे हैं. एंड ट्रॉपिकल डेसिडुअस की बात की जाए तो वो है वेस्टर्न घाट में एंड हिमालयन बेल्ट में है, एज वेल एज सम एरिया ऑफ द वेस्ट बंगाल, ओडिशा एंड द स्टेट ऑफ द छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश. सो फ्रेंड्स, बात करते हैं डेजर्ट इकोसिस्टम की. तो इंडिया में जितने भी डेजर्टिफाइड एरिया हैं उनका 60% जो है वो राजस्थान स्टेट में है, एंड जो रिमेनिंग 40% है उसे शेयर करते हैं हरियाणा, पंजाब एंड गुजरात. थार डेजर्ट, जिन्हें हम ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहते हैं, वो इंडिया के नॉर्थ वेस्ट पोर्शन में आता है, और इसी के साथ ही साथ वो इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर भी बनाता है. वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट जो है वो मॉडलैंडिया डेजर्ट है, जो कि एंटार्क्टिका में है, एंड द थार डेजर्ट इज़ द वर्ल्ड्स 17th लार्जेस्ट डेजर्ट. Along with this, the major animal species in the Indian desert are the Great Indian Bustard, Golden Fox, and the Chinkara. Talking about the mountains in India, the Himalayan range is a great range of mountain that spreads from north of India to the northeast region. Himalayan mountain cover about the 16% of India's geographical area. Himalayas are geographically divided into the four regions. That is, first is the Eastern Himalaya. That among the other part of Himalaya, Eastern Himalaya possesses a greater diversity in the flora and fauna. This region is the habitat to the many endemic species, and it is also called as the Assam Himalaya. The second is the Central Himalaya or the Nepal Himalaya. The fourth region is the Western Himalaya, that is the Ladakh region, and it was the third, and the last one is the Northwest Himalaya or the Punjab Himalaya. So friends, let's talk about the ghats in India. Basically, there are two ghats in India, major ghats in India, that is the Eastern Ghat and the Western Ghat. वेस्टर्न घाट को हम सह्याद्री भी कहते हैं. वेस्टर्न घाट जो है वो छः स्टेट्स में बटा हुआ है: गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला एंड तमिलनाडु. Western Ghat possesses highest biodiversity among the four hotspot in India, and Western Ghat receives an average rainfall of 250 centimeter. And along with this, Western Ghat region possesses one of the richest biological resources and form distinct biogeographical zone of the India. एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द ईस्टर्न घाट जो है फ्रेंड्स, वो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु में फैला हुआ है, and they do not possess continuous range like the Western Ghat. Basically in the Western Ghat the range are continuous, and if we talk about the Eastern Ghat, the ranges are not continuous, and this is because the Godavari and Mahanadi Krishna river cuts across the ghats. And if we talk about the rainfall that the Eastern Ghat gets is an average rainfall of the 60 to 150 centimeter, and the climate in the Eastern Ghat are basically the semi-arid and semi-humid climate. So friends, if you like our video, then please do subscribe our YouTube channel, and you can also like our Facebook page.